Well, it was a different Eid al-Zuha celebrations today as mosques and idgahs wore a deserted look in most parts of the region, with people choosing to offer namaz at home. We have this report. Empty mosques and idgahs. People choose to pray indoors. Amid the outbreak of COVID-19, Muslims across Assam celebrated Eid al-Adha, adhering to all safety protocols. In Guwahati, following the restrictions imposed by the administration, almost all the mosques allowed a gathering of 5 people for performing namaz on the occasion. Local Muslim organizations also called upon believers to stay at home and observe the festival within a safe perimeter. People in the state gathered at masjids and idgahs, adhering to social distancing norms and wearing face masks. While COVID may have changed the way Eid was celebrated, it clearly wasn't able to dampen the spirits as people prayed for well-being of humanity. In this present pandemic situation of Corona, today Eid prayers Nawaz was offered with maintaining proper social distancing, and also as the instructions given by the Deputy Commissioner of Sibsagar, many people were seen reading their Nawaz in their homes, and now we have a senior journalist with us, and we will know through him how this Nawaz were read first time because of this Corona in their homes. আজি পবিত্ৰ ঈদুল আজহা আৰু ঈদুল আজহাৰ 2 ৰাকাত নামাজ আজি আমি নিজৰ ঘৰতে পঢ়িবলগীয়া হৈছে কাৰণ আগতে ঈদৰ নামাজ আমি পঢ়ো ঈদগাহ নথবা মছজিদত কিন্তু এইবাৰ কৰোনা মহামাৰীৰ যিটো সংক্ৰমণ পেণ্ডেমিক যি কৰোনা মহামাৰী তাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টে যিটো নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিয়ম মানি আমি ঘৰতে নামাজ আদায় কৰিছোঁ আৰু এই কুৰবানীৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে আৰু এই তেওঁৰ মানে এলমাইটি গড আল্লাহ তেওঁৰ ওপৰত নামত এটা পহু জন্তু এটা কুৰবানী কৰা হয় আৰু সেই জন্তুৰ কুৰবানীৰ জৰিয়তে তেখেতক মানে আল্লাহৰ ওচৰত এইটো জন্তুটো সমৰ্পণ কৰা হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে এই ঈদুল আজহাটো আমি পালন কৰোঁ। Meanwhile, the Idgah at Medina Masjid in Shillong, which otherwise hosts thousands on Eid day, wore a deserted look today as people preferred to perform namaz at home in the wake of the pandemic. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. General Secretary of the Shillong Muslim Union, Noor Nogrum, while extended his greetings on the occasion, requested people to pray for the frontline workers, those infected with COVID and overall well-being and health. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On this auspicious occasion of Eid al-Adha, I would like to wish a very, very Eid Mubarak to all my brothers and sisters in faith. And also request them to pray from home. Pray for the frontline warriors against COVID-19. Pray for the ones who have been infected. Pray to God for their well-being and health. In Sikkim too, Bakri Eid celebrations was dampened by the pandemic. With the lockdown imposed in the state, the Jama Masjid, which is the largest mosque in Gangtok, remained largely empty today. People offered prayers at home, maintaining social distance. हमने अपने यहाँ स्टेट सरकार को सेंट्रल सरकार को मानते हुए अपने हित को देखते हुए हम लोगों ने ईद की नमाज भी जमात में नहीं पढ़ी और ये बकरी ईद की नमाज भी जमात में ही होती है, ईदगाह में ही होती है। और क्योंकि हमारे गैंगटॉक में ईदगाह है नहीं तो इसी जामा मस्जिद में हमारी नमाजें हुआ करती थी, मगर इस बार देख लीजिए एकदम वीरान पड़ा हुआ है, इसमें नमाज नहीं हुई। लोग अपने अपने घर में बकरी ईद की नमाज ना पढ़ के नफिल नमाज 4 रकात अदा किया। जिनके घर में है 2-4 आदमी वो अपने एक आदमी से अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग करके घर में नमाज पढ़ा। जिनके पास बकरा का इंतज़ाम है उन्होंने बकरा शायद किया होगा,
इस बार हम ही लोग यहाँ नीचे सबसे ज़्यादा मोहल्ले में रहते हैं, मगर हमारे ही मोहल्ले में बकरा न मिलने के कारण अब लॉकडाउन है, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। लोगों के पास पैसा भी होगा, खरीदा भी होगा, मगर ला नहीं सकते हैं। मोटर व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है। तो इसलिए हम लोगों का इस बार का कुर्बानी क्या हुआ कि घर में ही नमाज अदा करके अल्लाह को दुआ किया कि ऐ अल्लाह हमको इस एकदम महामारी से पूरे दुनिया को बचाओ। Meanwhile, mosque in Arunachal Pradesh, Itanagar also remains shut as Muslims choose to offer prayers at home. Mosque in Itanagar remains shut as lockdown continued in the capital complex. In Manipur as well, with mosques across the state closed due to the pandemic, Bakri Eid was celebrated indoors and people offered prayers at home. Governor Dr. Najma Heptullah and Chief Minister Biren Singh also extended their greetings to the people on the auspicious occasion. Singh further exhorted devotees to celebrate the festival and offering rituals and prayers in the safety of their homes. Bureau Report, Northeast Live.